Hello friends, welcome to Bindu Dhadwal Chemistry Lessons. The topic for today is from the States of Matter chapter. We'll be covering Charles' law, Gay-Lussac's law and Avogadro's law. So Jacques Charles in 1787 gave the law. It states that the volume of a given mass of gas increases or decreases by 1 by 273.15 of its volume at 0 degrees Celsius for each 1 degree rise or fall in temperature. अगर सपोज करें अगर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस की गिवन मास ऑफ गैस की वॉल्यूम V0 है, तो फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर उसकी वॉल्यूम इंक्रीज करेगी बाय 1 by 273.15 ऑफ V0. अब अगर 1 डिग्री में इतना है तो T डिग्री राइज इन टेम्परेचर में वॉल्यूम जो है उसको T से मल्टीप्लाई कर दे, इतना इंक्रीज होगा. और न्यू वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगी? वॉल्यूम एट V0 डिग्री सेल्सियस V0 प्लस ये V0 इंटू T अपॉन 273.15. तो इसमें अब V0 दोनों टर्म्स में है, इसको कॉमन निकाल दें तो वी गेट Vt इज इक्वल टू V0 कॉमन इंटू 1 प्लस T अपॉन 273.15. On plotting a graph between volume and temperature of a gas at constant pressure, we get a straight line. So here you see that with the increase in temperature, volume is increasing. Similarly, temperature is decreased, volume is decreasing. And if you, because this is a straight line, you can extrapolate it down in this manner so that a point in the temperature axis minus 273 degrees Celsius arrives where the volume decreases to 0. This is volume has decreased to 0. At T is equal to minus 273 degrees Celsius, the volume tends to be 0. This we can see from its mathematical equation also. Now T is minus 273, so this volume will be V0 into 1 minus 273 upon 273. This comes out to be 0. So the volume is becoming 0. So minus 273 degrees Celsius is the lowest possible temperature. Below this temperature, the volume will become negative, which is not possible. This lowest temperature is called absolute zero temperature. Lord Kelvin suggested a new scale of temperature known as absolute scale or Kelvin scale. So temperature in degrees Celsius can be converted to temperature in Kelvin by adding 273 to it. So temperature in Kelvin is temperature in centigrade plus 273. Now gases occupy zero volume at 0 Kelvin. This phenomena is not observed in daily life because all the gases generally change into liquid or solids before this temperature is reached. Alternative form of Charles law. तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल जो हमने केल्विन स्केल बनाया है जिसमें टेम्परेचर इन केल्विन इज टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273, ये वाला जो स्केल है इट हेल्प्स अस टू सिंप्लीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड गैसियस वॉल्यूम. कैसे? लेट्स डू. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हमारे पास ये इक्वेशन है Vt इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस T अपॉन 273.15. V0 इंटू ये मल्टीप्लाई हो गया 273.15 प्लस T. लेकिन ये टेम्परेचर इन सेल्सियस है और टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273 होता है टेम्परेचर इन केल्विन. तो लेट इट बी T केल्विन. सो 273.15 प्लस T इज इक्वल टू T केल्विन. और 273.5 जो है वो क्या है? इट इज T0. तो the temperature which corresponds to 0 degree Celsius on absolute temperature scale. तो अब इस एक्सप्रेशन में Vt इज इक्वल टू V0 इंटू T अपॉन V0 ये आ गया. Vt इज इक्वल टू V0 इंटू T अपॉन T0.
तो हम V0 को इधर ले जाते हैं तो एक्सप्रेशन आता है VT अपॉन V0 इज इक्वल टू T अपॉन T0, या T को इधर ले जाते हैं तो VT अपॉन T इज इक्वल टू V0 अपॉन T0. दैट मीन्स रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट. तो हम कह सकते हैं V अपॉन T इज कॉन्स्टेंट. इफ दिस कॉन्स्टेंट इज K2, so K2 is the constant which depends on pressure and mass of the gas, and it also depends on the units of volume. V is equal to K2 into T. अब इस एक्सप्रेशन में K is a constant, इसको हटा देंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा इक्वालिटी की जगह. तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. सो चार्ल्स लॉ को हम इस तरह से भी स्टेट कर सकते हैं कि प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट temperature. So if V1 is the volume of a certain mass of gas at temperature T1 and V2 is the volume of the same mass of gas at temperature T2, then according to Charles' law, V1 upon T1 is equal to V2 upon T2. So ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया जिसको हम यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में. So this we can put in the toolbox, mathematical toolbox. अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ है. एक्सट्रापोलेट करके -273 पे जो है वॉल्यूम 0 हो जा रही है. और अगर हम डिग्री सेल्सियस की बजाय वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन लेंगे तो ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि यहाँ 0 केल्विन है, एब्सोल्यूट 0, -273 यहाँ है. So this is the graph between volume and temperature, which is showing the Charles' law. Practical significance of Charles' law: use of hot air balloons in sports and meteorological observations. According to Charles' law, gases expand on heating, volume increases on heating. तो अगर mass of a gas sample in a given balloon is constant, तो हायर टेम्परेचर पे वो उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी. लार्जर वॉल्यूम मींस पर यूनिट वॉल्यूम मास कम हो जाएगा, क्योंकि गैस सेपरेटेड है, एक्सपैंडेड है, और यानी कि उसकी डेंसिटी कम हो गई. तो हायर टेम्परेचर पे डेंसिटी कम हो गई मींस हॉट एयर बैलून जो है इट विल राइज बाय डिस्प्लेसिंग कूल एयर, जो कि इससे हैवी होती है. तो इस तरीके से हॉट एयर बैलून्स राइज इन द एयर, और जब वो ठंडे हो जाते हैं तो दे कम बैक टू द ग्राउंड. प्रैक्टिस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन चार्ल्स लॉ. ऑन अ शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशन वेयर टेम्परेचर इज 23.4 degrees Celsius, the balloon is filled with 2 liter air. What will be the volume of balloon when the ship reaches Indian Ocean where temperature is high, 26.1 degree Celsius. So at a temperature 23.4, जिसको केल्विन में हम करेंगे 273 प्लस करके तो 296.4 आ रहा है. तो वॉल्यूम V1 है 2 लीटर्स और T2 299.1, 26.1 प्लस 273, और हमें क्या निकालना है V2. तो हमारे पास चार्ल्स लॉ में फॉर्मूला है V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2. तो V2 क्या हो जाएगा, V1 इंटू T2 अपॉन T1. Putting the values we calculate, answer is 2.018 liters. So very easy. A sample of gas occupies 1.5 liters at 25 degrees Celsius. If temperature is raised to 60 degrees Celsius, what is the new volume of gas if pressure remains constant? This you solve. This is for you to practice, and please give your answer in the comment box. Next law is Gay-Lussac's law. It is also a pressure-temperature relationship. Joseph Gay-Lussac stated that at constant volume, the pressure of a fixed amount of gas varies directly with the temperature. Mathematically, we can say pressure is proportional to T. So P upon T is constant, K3. In other words, we can say P1 upon T1 is equal to P2 upon
T2. So if we plot a graph between pressure and temperature, we get a straight line which when extrapolated meets the origin, that is temperature 0 Kelvin. Here the values are V1 volume is less than V2, then V2 is less than V3, and V3 is less than 4. Such graphs in which the volume is constant and there is a relationship between pressure and temperature are known as isocores. So pressure versus temperature graphs at different volumes are called isocores. Physical significance: a pressure in a well-inflated tire of automobiles is almost constant, but on a hot summer day, because with the increase in temperature, pressure will increase, the tire may burst if the pressure is not adjusted properly. Similarly, during winters, because of less temperature, pressure may decrease and you may find the tire is deflated. Next law is Avogadro's law. It was given by Avogadro in 1811. The law states that equal volume of all gases under same conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. So mathematically, volume is proportional to number of moles when P and T are constant. So to remove the sign of proportionality, we put the value K4 constant. So N is the amount of substance in moles. So number of molecules in 1 mole of a gas has been determined to be 6.022 into 10 to the power 23 and is known as Avogadro's constant. Now molar volume of the gas under different conditions. Now what are the conditions? If temperature is in Kelvin, 273.15 Kelvin, and pressure is 1 atmosphere, volume will be 22.4 liters. But if his pressure is in bar with 0 degree centigrade temperature, then volume is 22.71 liter per mole. And if the temperature is room temperature, that is 298.15 Kelvin, this is 25 degree centigrade, not 0, this is 25 degree Celsius. This is called standard ambient temperature and pressure, 25 degree centigrade. Please correct this. Though at this pressure is 1 bar, then volume occupied will be 24.789 liters per mole. Number of moles can be calculated by dividing mass with the molar mass, m upon m. So we know V is proportional to N, so V is equal to K4 into m upon m. And on rearranging, we get m is equal to, we take m upside and V downside. So m is equal to K4 into m upon V. But mass per unit volume is density. So we get molar mass is equal to K4 into D, or but D is the density. So density of gas is directly proportional to the molar mass. This is another relationship you can derive from the Avogadro's law. Thank you. Have a nice day. And if you like the video, please do share and subscribe.